Very good afternoon, everyone. So today we are back with a new case study presented by Subhashini and Coach Karan. They would be taking us through Neha's case study, how they helped Neha with workouts and nutrition plans from getting her from a three-digit number to a double-digit weight number, and how they helped her achieve her goals. Over to you, Subhashini and Karan. Thank you so much, Manpreet. So, as Manpreet told, this is Neha's transformation case study, wherein we call it as a comeback journey because she reached a three-digit number in her weight, and now we are at two-digit, and we are still moving on with her case. So, about Neha, she is a corporate worker. She works as an associate manager uh, in a company, which is again an IT field. She has a completely sedentary lifestyle. And when she came to WildFit with a weight of 106.8 kgs, she had a lot of issues about her gut, about her sleep, about her high stress, low water intake, and how did we get discipline into her life. And now she's at 93 kgs. That is about her comeback journey. So if you see the case conductors at the next slide, we have Karan as her performance coach and Subhashini, me as her nutritionist. This is how we took her case forward. The next slide will tell you about her client profile and about the client history. I just mentioned about that. If we go to the next slide, we have her BCS, the before BCA and the after BCA. So yeah, this is the BCA comparison. If you see, her weight went from 906.8 to 106.8 to 93 kgs. Her body fat mass in kgs has dropped from 49.1 kg to 39.1 kg, wherein her muscle glycogen has also dropped on a good number, wherein her fat percentage, if you see, has dropped from 46% to 42%. Moving ahead, Karan will guide you through her performance and her training program. हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो नेहा का केस स्टडी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो नेहा, जैसे कि सुभाषिनी ने बताया कि कॉर्पोरेट का मैनेजर है टैक्स में, तो हमने उसका स्टार्ट किया वर्कआउट बहुत ही एकदम बिगिनर से भी नीचे बोल सकते हो आप, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस, मतलब हेल्थ कॉन्शियस नहीं बोल सकते, बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे उसको हेल्थ के लेके कि मैं डाइट करूँ, वर्कआउट करूँ, कैसे कैसे मैनेज करूँ सारी चीजें, काम वगैरह। सो सुभाषिनी, मैंने उसका काउंसलिंग लेके उसको अच्छे से गाइड किया कि हम कैसे गो थ्रू इस जर्नी में कैसे कंटिन्यू करेंगे एंड कैसे रिजल्ट्स हमें दिखेंगे। तो जैसे वेट ट्रेनिंग का अगर स्टार्टिंग बताऊंगा तो सबसे पहले इनिशियली उसका फ्लेक्सिबिलिटी, एनर्जी लेवल्स, और मतलब इससे पहले उसने कभी वेट ट्रेनिंग किया नहीं था, जुम्बा करती थी वो। तो तब स्टिल अगर जुम्बा भी करती थी, स्टिल उसका एनर्जी लेवल्स एंड एंडोरेंस लेवल बहुत ही ज्यादा कम था। तो चैलेंजेस ये था कि हमें एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना था। बहुत बार ऐसे होता है कि किसी क्लाइंट का फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा होता है, एंडोरेंस अच्छा होता है, स्ट्रेंथ अच्छा नहीं होता है, तो दो तीन पैरामीटर्स अच्छे होते हैं, दो तीन पैरामीटर्स खराब होते हैं। तो इस केस में हमें सारे एकदम स्क्रैच से, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस, स्ट्रेंथ, सारी चीजों से रिकवरी, सारी चीजों पे काम करना था। तो सबसे पहले इनिशियली स्टार्टिंग डेज में मैंने उसका जब असेसमेंट किया, तो आई रियलाइज कि उसको वेट ट्रेनिंग में भी ओवरवेट होने की वजह से बहुत ही ज्यादा हाफती थी वो, ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थे उसको। 5 kg वगैरह से भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते थे हम स्टार्टिंग डेज में। तो जैसे फिटनेस असेसमेंट में देखा है कि स्टार्टिंग के 5 kg से हमने 10 and 15 रेपिटेशन किए, फिर धीरे धीरे हमने ऐड करते गए। सो ऐसे हमने उसका प्रोग्रेस किया। चैलेंजेस तो मोस्टली यही थे कि उसको कंसिस्टेंटली आना तो था, लेकिन रिकवरी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। फिर धीरे धीरे जैसे हमने स्टार्ट किया, न्यूट्रिशन अच्छे से ऑन पॉइंट होने लगा उसका। स्टार्टिंग से ही वो बहुत डिसिप्लिन थी न्यूट्रिशन के बारे में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गई थी उसको हेल्थ के लिए कि मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ऐसे ऐसे। तो फिर जैसे हमने उसका स्टार्ट किया जर्नी, तो वो फर्स्ट डे से, मतलब बाकी क्लाइंट्स होते हैं कि मैं आज 50% से स्टार्ट करता हूँ और फिर धीरे धीरे 100% तक जाऊंगा, तो उसका ऐसे नहीं था। वो स्टार्टिंग से बहुत अच्छा कर रही थी डाइट से। तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा उसको जर्नी में लेके आने के लिए।
तो आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग इनिशियली हमने जब ट्रेनिंग रूटीन उसका डिजाइन किया तो उसमें अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी स्प्लिट रखा। तो फर्स्ट डे पे जैसे हमने आप देख रहे हो स्लाइड में कि फ्लैट डंबल प्रेस वगैरह हम कर रहे, दो दो सेट से हमने स्टार्ट किया इनिशियली 20 रेप्स वगैरह। उसमें भी चैलेंजेस सेम अगेन कि बहुत ज्यादा एंडोरेंस लेवल कम होने की वजह से रेपिटेशन भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो धीरे धीरे इसके ऊपर ही काम किया। उसका फंक्शन, उसका वर्कआउट मैंने ऐसे डिजाइन किया कि जैसे अपर बॉडी लोअर बॉडी है, अपर बॉडी लोअर बॉडी एंड कार्डियो। तो जिस दिन मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा था सेम डे पे मैं थोड़ा बहुत कार्डियो भी उसका फंक्शनल ट्रेनिंग कर रहा था। तो इसका बेनिफिट मुझे हुआ कि आगे चलते चलते जैसे जैसे हम 2-3 मंथ्स आगे आए तो उसका एंडोरेंस लेवल बहुत अच्छे लेवल पे पीक हो गया। तो फिर मुझे उसका वर्कआउट एक डायरेक्टली एक अच्छा लाइक पुश पुल लेग्स पे मुझे शिफ्ट किया मैंने उसे। तो जनरली हम क्या करते हैं जैसे अपर बॉडी लोअर बॉडी स्प्लिट करते हैं, उसके बाद फुल बॉडी का भी स्प्लिट कराते हैं और फिर डायरेक्टली पुश पुल लेग्स पे लेके जाते हैं। तो ऐसे ना करके मैंने डायरेक्टली उसको पुश पुल लेग्स पे शिफ्ट किया क्योंकि उसका एंड्योरेंस लेवल बहुत अच्छा था और अच्छे से वो रिस्पॉन्ड कर रही थी सारे वेट ट्रेनिंग। तो आप नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे करंट वर्कआउट प्लान में। तो जैसे हम पुश पुल लेग्स करा रहे तो फ्लैट डंबल के इसको 12.5 के जैसे अच्छा खासा रेपिटेशन परफॉर्म कर पा रही है। प्रोग्रेशन देख बोला जाए तो प्रोग्रेशन जैसे ओवर द पीरियड टाइम 6 मंथ्स हो गया अभी उसको कंप्लीट, आई गेस आज ही शायद 6 मंथ्स कंप्लीट हुआ है उसको। सो बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया उसने और डबल डिजिट में वो अभी उसके वेट कैप में आ गई है। और आगे भी हम ऐसे ही मतलब थोड़ा और चैलेंजिंग वर्कआउट इंटेंसिटी वर्कआउट वगैरह बना रहे हो तो मेक श्योर कि हम नेक्स्ट 3 मंथ्स में और उसका 10 kg तो लूज करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। थैंक यू सो मच करण। इफ यू स्टिल इन द मीटिंग, मुझे ये चाहिए कि आप उनके डेडलिफ्ट का, आप उनके पीआर का भी थोड़ा सा बता दीजिए। ओके, सो करंटली हमने जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में हम अपर बॉडी लोअर बॉडी स्प्लिट थे तो मैं उसको ज्यादा कंपाउंड मूवमेंट्स नहीं कर रहा था क्योंकि ओवर होने की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा उसका कॉम्प्रोमाइज था। तो हम रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे जैसे स्क्वाट में हो गया, डेडलिफ्ट में हो गया। तो जैसे जैसे धीरे धीरे आगे चले गए तब हमने जैसे लाइक लास्ट 2-3 मंथ्स बैक हमने स्क्वाट एंड डेडलिफ्ट उसको इंट्रोड्यूस करा है मैंने। तो बहुत अच्छे से परफॉर्म करी। अभी फिलहाल उसका डेडलिफ्ट का पीआर है 100 kg। बहुत अच्छा, स्टार्टिंग में हमने 20 kg से स्टार्ट किया था, अभी 100 kg पीआर उसका और वो बहुत खुश है इससे कि मतलब लाइक वेट ट्रेनिंग तो डाइट तो हो ही रहा है, न्यूट्रिशन तो हो ही रहा है, लेकिन मैं एक लिफ्ट्स में भी एक मैं अचीवमेंट ला रही हूँ मेरे। तो और स्क्वाट्स में ऑलमोस्ट 70 kg का पीआर है उसका। और बेंच अभी हमने इनिशियली स्टार्ट किया, इंट्रोड्यूस किया तो बेंच में 30 kg वगैरह बेंच प्रेस कर दिया। थैंक यू सो मच। मूविंग अहेड, डाइटरी अप्रोच के बारे में हम बात करते हैं। कैन यू टेक द नेक्स्ट स्लाइड? Okay. So about the dietary approach, it was very simple कि जो भी वो घर पे खा रही है उसको कैसे enhance करे, because her issues in the beginning were very basic कि acidity is there, bloating is there, she's not eating on time, there is high stress because of her office job, and if you see her diet record, everything is carb rich. So around 60 to 70% of her meal was inclined towards only carbohydrates. So if you can read in the slide, the challenges what was there or the interventions. Her water intake was also low. She had cravings mainly about sweet, salty, and also chocolate. That is something she craved a lot. Eating out frequency was also more. Moving ahead to her gut health, that was also a challenge. Sleep was also a challenge. Along with all of this, what I applied was focusing on whole foods, that is millets, nuts, seeds, green leafy vegetables, berries. That is what she also liked. We reduced the high starchy foods. Since she enjoyed cooking her own meals, we were able to customize and experiment a lot around her needs. I also added CCF water, that is cumin, coriander, and fennel, which helped her improve her acidity and bloating. That was one thing which she is happy about now also, because from that time she's not having any bloating or acidity. So that's a win for us. We also added coconut water so that it will support her hydration, keep her electrolyte levels intact, and improve her energy levels. So she is a vegetarian. Being a vegetarian, there comes
a lot around her A class protein. So whey protein was one of our sources which we added. Paneer was there, and Greek yogurt was our primary source. After that, for her sleep, I also added chamomile tea and ashwagandha tea, which supported her sleep because of calmness and her, what we say, her neurons were more calmed till the time she slept. Moving ahead to the lifestyle modifications, there were three major meals along with one snack and CCF water in the morning and chamomile tea in the bedtime. Physical activity apart from her workout, that was around 7 to 8,000 steps was her target, but she hardly was able to complete around 3 to 4,000 of steps. And now this phase is there where she's trying to incorporate more of that. About her appetite, she had few dislikes, as in she did not like avocado and banana and curd. So I never added any of those in her meals. So that was easy for me to avoid high sugary fruits also. About her stress and sleep, she had a lot of issues with her sleep. She used to sleep around 3 a.m. and now that has improved. Her sleep quality has improved. Now she's sleeping around 12 to 1 a.m. because her shift also ends quite late. Moving ahead, if you see, there are two phases of her nutrition plan, initial phase and current phase. As we all know, that initial phase we call the plan as foundation because we are setting a foundation for any client or a person over here. So all of her meals are revolving around what she is eating at home. Just we or I have enhanced it by adding salad. I have enhanced it by adding buttermilk for her gut health, and I have also added the protein source. So initially, if you see, there was nearly about only 10% of protein, which I increased to 25% in the first meal plan. Wherein, if you see the supplement stack, it has only three supplements because we had got her uh, blood test done, wherein her B12 and D was low, and Inafix's Livfix also helped her for her inflammation, which was high in her blood test also. Moving ahead to the current phase, we are in the grow young phase, wherein her meal plans are also advanced. She is able to cook everything what is in the meal plan, and we've added again simple home cooked meals only, but there is more complex food what is included. So we have sprouts. We are also experimenting with the shirakati noodles. She likes Chinese, so I was not able to add actual Chinese, but shirakati noodles have helped us incorporating Chinese flavors also. She has regular rice bhakri, there's ragi ka chila and green leafy vegetable along with yogurt. And in the breakfast, you can see there's vegetables, there's a scoop of whey along with oats. So this is all simple, and we've changed her CCF water to lemon and ginger water for more working on her metabolism. If you see the supplement stack, there is Lipix, which is constant. B complex is there, vitamin C is there, and vitamin E is there. So that we've removed the vitamin D because her levels have improved. We've added C and E for more antioxidants and anti-inflammatory supplements. If you see ahead, you can see the supplement stack explanation. There is six supplements which we used in her initial phase. We used Loha stuff for her iron levels, which is on the next page. Magnesium is there and Brahmi is there, which supported her sleep and muscle recovery. These two supplements, specifically Brahmi, helped us improving her sleep, and that is an achievement for her because her sleeping for more than 7 hours was a challenge for her in her life. And that is achieved now, and she's sleeping around 7 to 8 hours, which is a good deep sleep. Moving ahead to the dietary pattern, if you see the comparison in the percentage, so the first initial schedule, what you see before schedule, the carb intake was around 70%, her protein was 10%, and her fat intake was 20%. And her recall, if you see, there's regular paratha is there, there's chai, there's a fruit bowl, uh, biscuits are there, sandwiches are there, and her sleep that is there majorly that she used to sleep around 3 a.m. or 1 a.m. That has changed
on a good amount, because if you see the comparison, carb is 50%, protein is 35%, and her fat intake right now is 15%. And she's sleeping early, which is a very good thing for us. Next slide tells us about her biochemical profile, initial and current. Initially, her vitamin D was 27.88, and now it is improved to 51.42. Her serum iron has also improved quite well. Hemoglobin has improved. Homocysteine has also improved, although homocysteine is still on a higher level, but it has improved from 23 to 15. Moving ahead to her meal pictures, you can see everything in her meal pictures. There's cutlets, there's oats, there's soup, there's chilas, there is chedagati noodles with a source of protein and vegetables, and also her tiffins are very colorful. So this is how her meal pictures look like, and she's never missed a single meal picture. Like, we have those obedient clients, right? She's one of them. She has all her nakras ki Subhashini ye nahi khana hai, wo nahi khana hai. I need to experiment. So we've tried and tested a lot of recipes, which few of which are over here. Moving ahead to her review, you can read about her review. There is a complete deep review about WildFit, about the coach, about the nutritionist, and that's our picture which we've clicked a few days back. And she has a complete changed personality right now, and that's a huge smile that she has. And now we are also targeting on her upcoming journey, which is we want, as Karan said, we want to achieve more 10 kgs, and there's a lot that we need to achieve on the training basis also. So that was about her case study. Thank you so much.